अभी अगला जो सेक्शन है जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका मकसद ये है कि हम ये बात करें कि आप हैसियत EDO आपकी क्या काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या आप पहले करते थे और अब ये रोड मैप और नए टारगेट्स के साथ एक EDO की क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और क्या नया उनका रोल होगा. So this section is absolutely vital to the whole 2 days training because it's about how you, not that you work hard because you already work very hard, it's about working effectively to deliver results for the children in Punjab, in your districts. So we remember the overall purpose here is to transform the education system in Punjab so that it's much improved, so that the education system contributes to that bright future of Pakistan that I talked about at the beginning. तो इस अगले सेक्शन का मकसद ये नहीं है कि आप और ज़्यादा काम करें. हम सबको पता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत काम करते हैं. इसका सेक्शन का मकसद ये है कि आप अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह करें, कौन सी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, कौन सी एक्टिविटीज़ को आप औरों को डेलीगेट कर दें. और ये सब चीज़ें समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत अहम है ताकि हम सब मिलकर पंजाब की तालीम का वो फ्यूचर अचीव कर लें जो कि हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बच्चों के लिए. And the most important part of that is the mindset or attitude that you have. Before tea, I used the metaphor of a river. Punjab is full of great rivers. In England, we only have small rivers, no really big rivers. You have 5 big rivers in Punjab. We have none in England. Wonderful big rivers with a lot of water in them. And the water always finds its way to the sea. It finds its way around any barrier. It can be a mountain, it can be a rock formation, it can be a dam. But whatever you put in the way of the river, in the end, the river finds its way to the sea. And the same is true of the barriers, the problems we face in education. We collectively are going to find a way around the barriers, over the barriers, through the barriers, so that we achieve our objective, which is improved performance of the education system. So I want to keep coming back to this idea of a river flowing to the sea and solving all the problems. There's no barrier too big to stop us achieving the objective. सर माइकल एक दरिया की मिसाल देते हैं कि जैसे एक दरिया है उसको समंदर तक पहुंचना होता है और उसके रास्ते में चाहे पत्थर आते हैं, पहाड़ आते हैं, चाहे कोई भी रुकावट आती है, वो दरिया उनसे निकल के अपने गोल और अपने मकसद जो कि समंदर है उस तक पहुंच जाता है. और हमें अपने टारगेट्स और गोल्स और ये जो हमारा इरादा है कि बच्चों को तालीम हो जाए, इसको उसी मेहनत और उसी ताकत और मजबूती से अपनाना चाहिए जैसे हम भी एक दरिया हैं और कोई भी मुसीबत जो रास्ते में आए, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, चाहे वो मिसिंग फैसिलिटीज हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मुश्किल इतनी बड़ी है जिसको हम काबू नहीं कर सकते. हम सब एक दरिया की तरह हैं जो कि हम अपने ये मकसद को इंशाअल्लाह जरूर पूरा करेंगे. Thank you, sir. And the other thing that I want to, a general lesson from the morning is part of the point of this training is that in addition to learning from us, you learn from each other. I thought there was a great conversation between Secretary Bahawal and others about facing up to some of the problems of political interference or the other barriers that you face. In a minute I'm going to show you some targets from Lahore district. So learning from each other is as important as learning from us. ये कह रहे हैं कि आपको एक दूसरे से भी उतना ही सीखना चाहिए जितना आप किसी और से, चाहे हमसे, चाहे डिपार्टमेंट से, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से सीखें. जैसे अभी आपने देखा आपस में डिस्कशन करने से एक डिस्ट्रिक्ट में जो मुश्किल है उसका हल किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है. तो अभी हम इस प्रोग्राम में आगे और ऐसी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको ये इंकरेज करेंगे कि अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करें और अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने की कोशिश करें. और अब हम लाहौर के डेटा को देखेंगे कि लाहौर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टारगेट एक तहसील तक किस तरह पहुँचाया जा सकता है ताकि आप भी उससे अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी उसको अप्लाई कर सकें. Okay, thank you. Could I have the next slide, please? The
want to give some example of the kind of target setting we were talking about with 14. This is the trajectory, the goal that they have at Lahore for teacher presence. What you see is at the beginning of the process they had 83.4% attendance, or 81.2, sorry, and the aim, their goal is to get to 88%. So this is the whole target and progress towards the target on teacher presence. Have the next slide, please. What you see here is how this was broken down. So the district of Lahore broke the target down into the two tehsils in Lahore city and the rest of Lahore. And then in each tehsil, they broke the target down again for each markaz, for each of the 37 markaz in Lahore. And you see that as a result of that process, each not only the district has a target, but each tehsil and each markaz has its own target. This means that the EDO of Lahore can monitor progress of each markaz towards his goal. Come with the next slide, please. And here you see the list of the different elements and how that can break down into quarterly targets for each of the areas. Next slide, please. Just to give you an example, on the right of the picture you see the whole teacher presence one for Lahore that I showed you 3 minutes ago. And then on the left you see two markers, one with already a high starting point, it's already at 89. It just needs to jump to 90 to enable Lahore to meet its district. But the second markaz starts with a very low starting point, only 69% teacher presence. That means that when this started, 30% of teachers were not attending. And their target is to get to 84. And the average out with 37 markaz in Lahore, that will enable Lahore to achieve its goal. So the challenge for the EDO in Lahore is to manage each markaz to its own goal. Saban, if you just want to summarize that briefly. इन स्लाइड्स में जैसे आपने देखा और अभी हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि आप सबके पास अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के टारगेट हैं, लेकिन उन टारगेट को अप्लाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तहसीलों और मरकज़ों को भी देखें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और उनको कितना परफॉर्म करना पड़ेगा टारगेट मीट करने के लिए. क्योंकि अगर आपकी कोई तहसीलें हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, और कोई तहसीलें हैं जो पहले से अच्छी हैं बहुत, उन पर कम तवज्जो देनी होगी. तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने टारगेट को लेके उसको डिस्ट्रिक्ट्स के मरकज और तहसील लेवल पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करके आप देखें कि आपको किधर ज़्यादा अपना फोकस करना है और किधर कम करना है. और ये एक्सरसाइज जो है ये आप अपने DMO की मदद से कर सकते हैं, उनके पास ही कैपेबिलिटी है. ये हम PMIU के थ्रू आपकी मदद भी कर सकते हैं इस चीज़ में. So what you see here is the implication of this for what you do as an EDO is a big change of role. The old role, we'll come to in a minute, the new role is about managing the markers, the tehsils in your district so that they achieve the objectives that have been set by the roadmap and to which the Chief Minister, the Chief Secretary and the Secretary of Schools attach such importance. Now the next slide, please. This is the old role. This is the role that you had according to the World Bank a year or two ago. This is the list of things the World Bank said a couple of years ago that you should be doing. It's in your handbook. This slide. So here you see a range of things about administration, about meetings,
about transfers and postings. When you look at this, you see nothing about managing performance. There's nothing about making sure that the markers improve performance, either teacher presence or student enrollment or learning in classrooms. This is an administrative role. Now, some of these things are important, but if you just do these things, it's not going to change how much children learn. It's not going to change how many children go to school. It's not going to change how many teachers pay attention and go to school. So we're saying that the role needs to change from this role to something new. And we want you in the next 2 hours to help us redefine the role. Help us talk about what the new EDO role should be. Tomorrow, when the Chief Minister comes, we are going to present to the Chief Minister on what the new role of the EDO was. This is what it was in the past. This is what it's going to be in the future. We're going to agree that among ourselves in the next 2 hours, and then we're going to present it to the Chief Minister. So this is very important. And the point of the training is to help define the role and then ensure you have the skills, commitment, and ability to learn from each other to play that part. One way we tried to understand this was last time the EDOs met in Lahore in April at the launch of the roadmap. We had a conversation with you. You did a survey of how you spent your time. Saad and Ali are going to present that, but before Saad presents, he's just going to summarise in Urdu what I've just said in English, and then I'll hand over to him. तो ये जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये 2-3 साल पहले EDO की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डेफिनेशन बनाई गई थी. अब आप अगर इसको देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सी अहम चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि आप अपने मरकज़ों और तहसीलों को इस तरह मैनेज करें या टारगेट्स दें या टीचर्स को इस तरह स्कूल में लाएं या बच्चों की यूनिवर्सल प्राइमरी एनरोलमेंट पे काम करें. तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी ये रोड मैप और आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, उससे आपका रोल जो है वो काफ़ी बदलता जा रहा है और ज़्यादा अहमियत का रोल होता जा रहा है. तो अगले इस दिन में और अगले दिन के शुरू में हम लोग आपकी मदद से ये डिफाइन करेंगे कि EDO का नया रोल क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस चीज़ में फोकस करना चाहिए उसे, और फिर वो चीज़ आप चीफ मिनिस्टर साहब को प्रेजेंट करेंगे कल जब वो आएंगे कि हमारे ख्याल में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. इस चीज़ को समझने के लिए कि आपको किस तरह अपना काम शिफ्ट करना है. अब लास्ट टाइम आप जब बाहर आए थे तो आपको याद होगा हमने आपसे एक सर्वे कराई थी जिसमें हमने पूछा था कि हैसियत EDO आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपने क्या क्या सक्सेसेस अभी तक की हैं, और आप अपना टाइम किस तरह तकसीम करते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में. तो हम उससे शुरू करेंगे और फिर आगे जाके सेशन के आखिर में हम ये डिफाइन कर लेंगे कि अभी तो ऐसे होता है EDO का काम, लेकिन आइडियली और चीफ मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से EDO को अपना रोल किस तरह बदलना चाहिए. तो अब अली आपको बताएंगे आपकी सर्वे के रिजल्ट्स जो पिछले महीने हुए थे. बेसिकली हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे जो कि लेफ्ट साइड पे 3 बॉक्सेस में आपको. सबसे पहला सवाल ये था कि अभी तक आपके ख्याल से आपकी सबसे ज़्यादा